Assalamualaikum. So the topic that we'll be doing today is normal distribution. पहले उससे पहले first we need to understand what is a continuous random variable. We already did discrete random variable. इसमें अगर मैं आपसे कहता कि what is the probability that x is less than 5, तो आप डायरेक्टली किस पे जंप करते थे? Less than 5 पे what were you doing? X is equals to 4, x is equals to 3 and 2 and so on. Now, right? What if the variable is continuous? सही है ना, कोई भी variable हो सकता है. For example, weight of a substance. Like, what is the probability that weight of substance is less than 5 kg? अब less than 5 जरूरी थोड़ी 4 हो, 4.999 भी तो हो सकता है, 4.98, 4.97. So all these in between values are possible, and that is what is called a discrete, or that is what is called a continuous random variable. तो जिस तरीके से we plot frequency density, इस तरह हर variable के अकर करने की another quantity is called probability density. हम इसकी डिटेल में नहीं जाना, but probability density की वजह से we get different distributions. हमने binomial पढ़ा हुआ है, geometric पढ़ा हुआ है. Now we are talking about normal. Normal distribution is for a continuous random variable. For example, एक variable है जिसका mean 30 है और standard deviation 4 है. So this is how the data will look like. अच्छा, what do we have to see in this one? जब हम frequency density का बनाते हैं, when we draw the graph of frequency density, so how do we get frequency from there? Frequency density के histogram. So how do we get the frequency? The area under a bar. इसी तरह this graph is for probability density. How will you get probability from this one? The area under the graph. So what is so special about this? This graph में on the x-axis you have the continuous random variable, and the area of any particular region will provide you the probability for the variable to exist in those values. Example दे रहा हूं. So what is again दो चीजें इस ग्राफ के बारे में देखना स्पेशल क्या है. What did I plot in this one? A variable जिसका mean 30 है and standard deviation is 4. So बिल्कुल mean बिल्कुल बीच में आता है 30. This is a symmetrical graph. Not all continuous random variable have these, but in our syllabus the random variable that we'll be dealing with continuous wala is normal. What is so special about a normal variable? Mean उसका बीच में होता है. Mean के around the data is symmetrical. The data is symmetrical. तो mean 30 होगी और उसके around अगर symmetrical data है, तो that is how you get your graph for a normal distribution. एक और मैं बनाता हूँ normal distribution का graph. Mean 30 रखते हैं. Now what if I increase this standard deviation to 10? What should happen? You are well aware of the concept of. Very good. It will stretch horizontally. Is that right or wrong? Clear है या नहीं है? The total area under the graph must be 9. What does the area of the graph tell us? Probability. So what should be the total area under the graph? What is the total probability? 1. So the total area under a graph is 1. इसी तरीके से मैं एक और लेता हूँ normal distribution और उसका मैं mean 30 रखता हूँ, and what if the standard deviation कम करके 3 कर दूँ? Now what will happen? Getting it? समझ आ गई बात? इसी तरीके से गौर से देखना. एक और मैं बनाता हूँ, but let me remove these two. येलो वाला हटा दें. What if I take another one और उसका मीन मैं रखूं 40, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 रखूं. फिर कौन से वाले की स्टैंडर्ड डेविएशन 3 थी? द ग्रीन वन, राइट? और से देख 40 बीच में आ गया मीन, and standard deviation of 3, the stretch of the graph remains the same. Is this clear? That means सब ग्राफ थोड़े बहुत एक जैसे ही होंगे, एक दूसरे के जैसे होंगे. So every question that we will deal for a normal variable, how can we find area under a graph? Do we know probability is area under the graph, but how to find area under the graph? Have we studied any method of finding area under a graph? P1 में पढ़ा था integration. But we will not integrate in this, don't worry. Yes, we can find area under a graph through integration, but यहाँ पे हम compare करके areas निकालेंगे. What will we compare and how will we compare that? Don't worry.
सबसे पहले अंडरस्टैंड द नोटेशन ऑफ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल. देयर आर x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन इज म्यू, और यहाँ पे उसकी नोटेशन में भी मेंशन वेरिएंस. वी डू नॉट मेंशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वी मेंशन वेरिएंस. एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जिसको हम z कहते हैं. What is so standard about Z? Z is a standard that we've already established, जो हमारे पास जिसका टेबल भी प्रोवाइडेड होता है. This is the table for Z. Z is again a normally distributed variable. उसका mean होता है 0 and the standard deviation is 1. So if you were to write the same notation with Z, what will you write? Z is normally distributed with mean as 0 and standard deviation 1 है, तो variance भी 1 ही होगी, 1 का square 1. Is this clear? Can I say, और से एक बात सुनना, that no matter what variable you have as x, no matter what variable you have as x, it will just be a translated and stretched form of z. हर नॉर्मल वेरिएबल एक दूसरे का ट्रांसलेटेड और स्ट्रेच्ड फॉर्म है या नहीं है? या तो ग्राफ आगे पीछे हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है. इज दिस क्लियर और नॉट? z का मीन कितना है? 0. और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? तो हर चीज को हम रिलेट z से ही करेंगे. गौर से देखोगे, अगर x माइनस म्यू करते हैं तो दिस इज रिवर्स ऑफ ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा. दिस इज द रिवर्स ऑफ स्ट्रेच. अभी करेंगे, बात समझ में आ जाएगी. रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट डज द क्वेश्चन से? Melons are sold in 3 sizes: small, medium, and large. The weights follow a, that means the weights were continuous variable with mean 450 grams and standard deviation. Write this as notation. Notation लिख के बताओ क्या होगा. Weights को क्या क्या वेरिएबल दे रहे हो? नाम बता दो, खुद नाम रख लो, सवाल ने नहीं दिया तो. W कह दो. W is normally distributed. W कैपिटल W देना सही है ना. W is normally distributed. Mean is 450, 120 square. 450, 120 square. Now what is the question? Melons weighing less than 350 grams are classified as small. How will we approach this? इस बात को समझना बच्चों. How do you approach this? This is your normally distributed variable. आपने इस केस में इसको W का, and साथ ही I will draw a standard normal distribution as well so that we can compare. You will not use integration. Standard normal का mean कितना है? Standard normal का Z जो होता है 0. Now the mean that you have, let's go through the question that you are dealing with. So your mean is 450, which should be exactly in the middle, right? And the question is asking you melons who weigh less than 350. Where should 350 be? On the left. This is something that we have to analyze. 350 left पे होगा. And which area are we concerned about? उसका left side वाला. So this is what we want. This is the question. Is that right or wrong? Right? There are two limitations to the data that is provided to us for Z. What are those two limitations? वो कभी भी Z की नेगेटिव वैल्यू के साथ डील नहीं करेगा और ग्रेटर देन का एरिया नहीं बताएगा. डोंट वरी अबाउट दीज टू लिमिटेशंस. ये दोनों समझ में आ जाएंगे once we do a few questions. How will we approach this question? What did I tell you? Whenever we have to find anything, we will not use integration. Rather, we will compare it with the standard normal. Is that right? How do we compare it? हम कहते हैं अच्छा जब ये 350 है तो उस वक्त Z की क्या वैल्यू. सही है, हम कंपेयर करते हैं. How do we compare? We have this formula. Z is equals to x minus mu over sigma. Z की वैल्यू निकालनी है. What value है? X की क्या वैल्यू है? नहीं, वो तो मीन है.
For what value of x are you searching for z? 350. x की जगह you put 350, आपने w लिखा है, w की जगह 350 minus 450 upon sigma is 120. क्या है z वैल्यू निकाल कर बताओ? 350 minus 450 upon 120. What is your value of z? 3 decimal place तो बताया करो z वैल्यू. Minus 0.833. So technically, you are trying to find the area minus 0.833. जल्दी बहुत है, इसकी सारी गड़बड़ होती है. This is the area we want. Is that right? Now look at the table. Table में एक दो limitations हैं. क्या दो limitations हैं? Z की कोई negative value पे वो आपको area नहीं देता. दोबारा बता दो how to read this table. This is Z values to 1 decimal place. This is the first decimal place. यहाँ पे this is the second decimal place of Z, and this is the third decimal place. और बीच की जो सारी values हैं that represents your area. For example, Z की value 0.0 ही read करोगे तो area कितना होगा? 0.5. Is that right? दो limitations है इस ग्राफ की. वो कभी भी आगे वाला एरिया नहीं बताता, हमेशा पीछे वाला बताता. उसने पहले ही बता दिया ऊपर भी. The other limitation is वो Z की कोई negative value को entertain नहीं करता. And both of these limitations can be overcome by using two properties of the graph. What are the two properties? What is the total area of the graph? 1. We can use this property. अगर हमें आगे right वाला area चाहिए, हम left वाला निकालें और area को 1 से. What is the other property of the graph? The graph is symmetrical. What does that mean? If you are trying to find the area of minus 0.833 से पीछे का area निकालना चाह रहे हो, symmetry का Z का symmetry का बीच में क्या value है? 0. That means 0.833 से आगे का area भी same होगा. Is that right? Clear है या नहीं है? लिखना भी सीखो, notations भी सीखो. This is what we want as in the question, right? And this is how we will find it. Probability of Z is less than minus 0.833 will be equal to probability of Z is greater than 0.833. We still have another limitation of the graph. अब हमें right वाला आगे वाला एरिया चाहिए. आगे वाला एरिया वो हम अगर 0.833 पे एरिया निकालेंगे भी तो वो कौन सा एरिया देगा? पीछे वाला देगा. Is that right? And how will you find the area that we need? 1 से माइनस कर देंगे. 0.833 पे ग्राफ कैसे रीड करते हैं जरा ऑब्जर्व. 0.8, this is your first decimal place. 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84 पे चले जाएंगे. आप 4 पे नहीं जाना. 0.83 से थोड़ा सा आगे जाना है. Is that right or wrong? This is 0.83. कितना आगे जाना है तो यहां से पता चलता है. 3 and 3. ये this is your sabar. This is your third decimal place. And third decimal place says कि 8 ऐड कर लो. 8 किस में ऐड कर लो? Add 8 as if there is no decimal. समझो decimal है ही नहीं और 8 ऐड करो. समझो. अब दोबारा decimal लगा दो. 0.797. क्लियर है नहीं है? What area is 0.7975? ये पीछे का जो पूरा एरिया है, this area is 0.7975. But did you need this area? तो हम क्या करेंगे? इस एरिया को 1 से माइनस कर देंगे. Is this clear or not? This I know this is too much to process. Do it step by step. एक और चीज बता दूं, ये देख लो. जब भी, अब ये काम 2 दफा करना पड़ेगा. Whenever we want कोई भी नेगेटिव वैल्यू से पीछे का एरिया निकालना है तो you will always have to do this. First you will reflect it, find the area and then subtract that area from 1. So you can write this as well for this, and this is already written. गौर से देखना, इसको समझना है कि probability of z is less than minus z. अगर minus z से कोई भी पीछे की वैल्यू निकालनी है तो पहले आप उसको रिफ्लेक्ट करके z से पीछे की वैल्यू निकालते हैं.
and you subtract that area from 1. It is also written in your table as well. इसमें भी लिखा हुआ है, गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है। एरिया को प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू z को phi ऑफ z भी कह सकते हैं। सही है। So what does the question say? Phi of minus z can be found by taking 1 minus phi of z. Phi of z का वो एरिया को phi of z कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू z का phi of z भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात होती है। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू z। क्लियर है या नहीं है? तो यू विल हैव टू डू इट मल्टीपल टाइम, इसलिए हम इसको एक दफा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 0.2025। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसका करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। The times taken in minutes to complete a particular task by employees at a large company are normally distributed with mean 32.2 and standard deviation. So if, अगर again बार बार notations के लिए कहता हूँ, notations is there to help you understand, because some questions only provide you with notations. ये पूरे sentence को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, where x is the time taken by employees to do one particular task. Is that right? Is that right? Then I'll give this one a try. This maybe you have 32.2 as your mean and draw Gaussian bell curves to help you understand. And this is the question, probability x is greater than 28.6. हमने कहा कि z value निकाली, इसकी z value is negative. This is the question, and हमने कहा नहीं, हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो it is the same thing. 0.375 पे we read the probability 0.37 ये रहा, and 5 says add 19. 19 ऐसे add करो जैसे decimal है ही नहीं, तो 0.6462 and that is our answer. Is that our answer? हाँ, हमें greater than 28.6 चाहिए था ना, that is our answer, 0.6462. ओके, आप इसको रिवर्स रीडिंग भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ओके, पहले मेलन्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स लुक एट पार्ट 2. So the rest of the melons are divided in equal proportions between medium and large. Find the weight above which the melons are classified as large. So melons का मीन हमारे पास कितना था? 450. 350 से छोटे वाले वर क्लासिफाइड एज स्मॉल। 350 से छोटे की प्रोबेबिलिटी क्या थी? व्हाट वाज दिस प्रोबेबिलिटी? यस बच्चों, व्हाट वाज दिस प्रोबेबिलिटी? क्या थी प्रोबेबिलिटी? 0 पॉइंट आंसर नहीं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। दैट इज ऑब्वियसली 0.2025. Now the question is telling you that the remaining है उसको equally बांट दिया, आधे मीडियम एंड आधे लार्ज। करो 1 में से माइनस करो, you will get the remaining area. साथ साथ make these rough sketches whenever you can. They'll help you solve the question and get you method marks. Zero point 3988 ले लूं तो probability 4 decimal place पे रहेगी वो। और से देखना, that means large वाले, if these are the large ones, इनकी probability है 0.38 3988, और बीच में जो मीडियम वाले उनकी probability 0. नाउ मुझे
I need to figure out कि what is the weight जहाँ पे ये classification होती है कि कौन सा large है और कौन सा medium है. How will we do this? Again, we'll take the help of standard normal. गौर से देखो, standard normal का area हमें पता है. What is this area? Large का 0.39. But again, the graph has a certain limitation. वो आगे वाला area देता ही नहीं है. 1 से minus करो, you will get पीछे वाला area. And what is that? The area for the less than region. (0.6012), right? 6012 पे you must find the value of z. Now understand, this is your probability 0.6012 and you are trying to find the z value. How will you read the table now? 0.6012 ढूंढ रहे हैं, probability से ढूंढ रहे हैं, फिर उसकी z value देखेंगे. 5948, 5987, 6026 आगे ही चलेगा, हमें तो 6012 चाहिए था. 5987 में कितना ऐड करूं मैं? करो करो ना, 6012 से माइनस करके पता चलेगा ना कितना ऐड करना है. $64 ऐड करना है. 6, you want to go to 6012, right? 25 ऐड करना है. Do you have, let's see, do you have an option? बिल्कुल बीच ले लो. अगर इस तरह से आ गया, दैट मीन्स 6 के आगे भी एक डेसिमल प्लेस ले लो, 65 हो जाएगा. तो इसको सम, what is your z value then? Understand what is your z value? 0.2 first decimal place, 565. 0.2565 is your z value. समझ में आई है बात? 0.2 first decimal, second decimal is 5, third decimal 6 और 7 के हम चाह रहे हैं बीच में हो जाए. 0.25, that is the z value. Now you have the z value and you must find the x value. आपको z पता चल गया, z is 0.2565. You can use the same formula, z is equals to x minus mu over sigma. 257 भी ले लोगे तो कोई मारेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इतना जब क्लोज हमारे पास आ जाता है, जो क्लोजर वाला होता है हम वो लेते हैं. अगेन z is equals to x minus mu over sigma. जब z is 0.257 या 2565, what is the value of x? What is the value of x? 450, 481. Is this clear now? We must be very smart when using graphs for normal distribution, the Gaussian bell curve or the data from the table. And don't forget that the graph is symmetrical no matter what normal distribution you are dealing with. And the total area is 1. Be smart about it. Read the next question. Tire pressures on a certain car independently follow a normal distribution with mean and standard deviation 0.15 parts. ये कितने टायर प्रेशर्स की बात हो रही है? This will give me tire pressure for one single tire. Is that right? So what is the mean? The mean is 1.9. And the standard deviation is 0.15 bars. What does the question want? (1.82) and 1.92 कहाँ आएगा? Means आगे 1.92. And what about 1.82? What about 1.82? So I need to find the probability of this region or the area of this region. Is that right? Is that right or wrong?
but that will give me the probability that a single tire has a probability that उसका pressure इसके बीच में है. हाँ, multiply by 4. एक का भी इसमें है, दूसरे का भी इसमें है, तीसरे का भी इसमें है. Think of a tree. पहले एक का तो निकाल लो. Let's find this probability first. Find the probability that a tire has a pressure between 1.92 and 1.82 bars. Again, you will take the help of Z, standard normal distribution. So पहले what you people did? Z की वैल्यू निकाली. एक Z की वैल्यू क्या आई है? 1.92 पे the Z value is 0.133. So 1.92 पे when I found the Z value as 0.133 using Z is equals to X minus mu over sigma, and when I read it from the table 0.1, 3 and 3 कहते हैं 12 ऐड कर लो तो कितनी आ रही है probability? But what probability is that? 0.5529. वो इस वैल्यू से पीछे की पूरी probability. Do I need that entire value? नहीं, मुझे बीच वाली चाहिए, तो इसमें से I have to subtract something. सही है. फिर 1.82 की Z वैल्यू हमने निकाली. Understand the notations as well. 1.82 पे Z वैल्यू क्या आई है? -0.53 थी, और हमें उससे पीछे का चाहिए. मैंने कहा था काम बार बार करना पड़ेगा, तो we'll read on 0.533 and we'll subtract that probability from 1. 0.53 और 3 कह रहे हैं, इसमें 10 ऐड करो, 0.7029, और उसमें से अगर 1 subtract कर लोगे तो 0.2971. ये कौन सी probability है? 0.2971. 1.82 से जो पीछे की probability है, this is the one, right? तो टोटल जो आपकी आई है उसमें से आप ये वाली probability माइनस कर दें, and you will get the probability for the pressure being in between 1.82 and 1.92, and that is 0.2558. But that is the probability of one tire having a pressure in between 1.82 and 1.92. The question is asking, no, not multiply. Multiplying by itself. समझ आ रही है बात? कि चारों सक्सेसेस हमें मिल जाएं. Is that right? So success to the power 4. Is this clear? Okay, now give the second part a try as well. सोच समझ के try करना. That the pressure must be between 1.9 plus B and 1.9 minus B, and 80% of the tires already have pressure in this limit. So जितना 1.9 से 1.9 plus B and जितना आगे है 1.9 plus B, exactly 1.9 minus B, तो नहीं पीछे. So this is just symmetrical that. And the question is telling us that the area in between is 0.8. So very good. So 0.2 बच गया. That means this area is 0.1 and this area is also 0.1. So, कौन सी वाली वैल्यू को Z वैल्यू रीड करने के लिए हमें जाना चाहिए? 1.9 प्लस B और माइनस B? प्लस B is a better option. So if I read 1.9 plus B की Z वैल्यू मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, do I know the probability? Of which probability will I need? I'll need the probability उस वैल्यू से all the way back. So how much is this probability? 0.9. And when the probability is 0.9, what is the value of Z? अभी जो common probabilities होती हैं 90%, 75%, you do not have to dive deep into the table for this. वो values नीचे भी given होती. So when the probability is 0.9, what is the Z value? 1.282. So Z has a value 1.282 when X has a value 1.9 plus B. Is that right? Use the formula. When X has a value 1.9 plus B, Z has a value 1.282. Use this to solve for B.
Value of B is 0.1923. You add that to 1.9 to get your upper limit. And you can write down the final answer to three significant figures. And you subtract that from 1.9 to get your lower limit. Now give this one a try. The lengths of fish of a certain type.